तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम वीडियोस पे देखने वाले गाइस डिटरमिनिस्टिक पुश्ड ऑटोमेटा एंड नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश्ड ऑटोमेटा डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। तो इस वीडियोस को में आप नए हो तो एजुकेशन चैनल में आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ठीक है। अब वीडियोस को हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो को रिमेन करते हैं। तो डिटरमिनिस्टिक एंड पुश्ड ऑटोमेटा में क्या लिखा है, डिफिनेशन क्या है इसका। पुश्ड एंड डिफिनिटी इज एन डिफिनिटी वेयर फॉर एवरी स्टेट इनपुट सिंबल एंड स्टैक सिंबल एट मोस्ट वंस पॉसिबल बूट ट्रांजिशन एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश्ड ऑन ऑटोमेशन एंड एनपीडी और मल्टीपल पॉसिबल मूव्स एंड ट्रांजिशन फॉर गिवन स्टेट इनपुट सिंबल एंड स्टैक सिंबल, ठीक है। ट्रांजिशन फंक्शन क्या दिया, ट्रांजिशन फंक्शन मस्ट डिफाइन एट मोस्ट वन नेक्स्ट मूव फ्रॉम ईच कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट इनपुट सिंबल स्टैक टॉप, ठीक है। द ट्रांजिशन input function can define many possible more including epsilon transitions, ठीक है। डिटर्मिनिज्म क्या है, कॉम्पिटिशन पाथ इट इज लिस्ट वन एक्सेप्ट द इनपुट इज एक्सेप्टेड। epsilon transitions allow only for no input symbol transition is possible for the same configuration. In epsilon transition can occur free when if input transition are available. Asset language class acceptance determines context free language asset all context free language, ठीक है। एंड एक्सेप्टेंस क्या गया, यूजुअली एक्सेप्ट फाइनल स्टेट ओनली कैन नॉट एक्सेप्ट बाय एम्प्टी स्टेट इन जनरल डिटर्मिनिस्टिक कैन एक्सेप्ट फाइनल स्टेट और एम्प्टी